अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्जाम्स में आपसे हर साल पूछा जाता है। दैट्स अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो व्हाट सेक्स डिटर्मिनेशन? अगर डिफाइन करना हो तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन डिफाइन कर सकते हो: द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड, okay, is determined is called sex determination. So the process by which the offspring, the developing offspring inside the mother's womb, whether the developing offspring is the male or the female, so we can determine it by the combination of chromosomes, by the fusion of chromosomes. So determining the sex of the youth, determine sex of a person, or sex of an person, that sex of an offspring or a fetus that's developed inside the mother's womb is to be called as sex determination. Okay, so हम कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमंस के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम्स, 44 chromosomes are called as autosomes, and one pair of chromosome is to be called as sex chromosome. That is, in case of male, that sex pair of sex chromosome is X and Y, and in case of female it is X and X. So 44 autosomes, they determine your physical features, and say they determine your different body features, and one, that is sex chromosome, it determines whether you are an offspring, the offspring is male or the female. Then when the gamete formation take place in when the gamete formation, I mean say that when the gamete formation take place in case of males, तो मेल्स में जब गीमेट फॉर्मेशन होती है तो गीमेट फॉर्मेशन जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं, तो हाफ ऑफ द स्पर्म्स जो होते हैं उनमें होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स, तो हाफ ऑफ द स्पर्म्स में होते हैं वाई क्रोमोसोम्स। मतलब अगर ड्यूरिंग वन एजुकेशन there are 2000 sperms, suppose 2000 sperms are being released, and out of these 2000 sperms, the 1000 sperms may contain the X chromosome, and the rest of the 1000 sperms may contain the Y chromosome. So we just call that, the combination will be like this, that some of the sperms may contain 40, some of the sperms may contain 22 plus X, and some of the sperms, so we just call that some of the sperms may contain 22 plus X, and some of the sperms may contain 22 plus Y. Okay, 22 plus Y. So that's why this combination, that's why the males are to be called as heterogametic. Why? Because some of the sperms they release contain X chromosome, and some of the sperms they release contain the Y chromosome. So they produce the two types of gametes. Half contain X and half of the gametes may contain the Y chromosome. That's why males are to be called as heterogametes. Where in case of females, they also form the egg, and the formation of egg is called oogenesis. Then it's released in oviduct. Okay, and once the egg is being formed, it may contain 22 plus X. जितने भी x बन जाएंगे सारे में होंगे 22 प्लस x, क्योंकि इस x में से एक ही x या ए एक्स डिसेंड हो जाएगा। तो दे में कंटेन, जितने भी x आ जाएंगे, इट में कंटेन द सेम chromosome, that's X chromosome. So that's why females are to be called as homogametic, क्योंकि जितने भी gametes आ जाएंगे सारे gametes में X ही chromosome होंगे। तो now अब
फर्टिलाइजेशन के दौरान मैं समझा देता हूँ कि मतलब कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। कि मानो कि एक एग जब ओलेशन हुई, oogenesis हुई, एग जो होगा वो रिलीज हुआ एक फेलोपियन ट्यूब में। तो अब स्पर्म्स, द बिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्जेड। तो इन स्पर्म्स में आधे sperm जो होते हैं when they pass travel from the vagina, then cervix, the uterine cavity, then up to the fallopian tube or oviduct. Some of them may die, कुछ की vitality mobility और ख़त्म हो जाती है, और number of the sperms, I mean say that egg, इसके बाद भी egg जो होता है thousands and the you know that millions and sperms are being uh, it's being surrounded by the thousands, and it means thousands of the sperms, ये मतलब it being इसको surround करते हैं। तो जितनी भी sperms surround करेंगे तो sperms are we just call they are heterogametic. Some of the sperms may contain X chromosomes and some of the sperms may contain Y chromosomes, some of the sperms may contain X chromosomes. अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ सेक्रेटरी चांसेस ये हैं कि फीमेल एग के पास एक ही क्रोमोसोम फिगर होगी, दैट इज 22 प्लस एक्स। मानो कि अगर इस स्पर्म को चांस मिल जाता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट विल बी 22 प्लस फीमेल का एक्स, ओके, 22 प्लस फीमेल का एक्स, और 22 प्लस वाई मेल। So what will be the total number? It will be 44 plus X and Y. So total number of chromosomes 44, 45 and 46. Then but it will be 44 X and Y. So 44 X and Y 46, but it is a combination is X and Y. So the offspring will be male. Okay, because we know that males contain the X and Y chromosomes. But if this X sperm containing X chromosome is fertilizes the egg, if the sperm carrying X chromosome gets a chance to fertilize the egg, what will be the result? It will be again 22 plus X का सेम ही रहेगा, और अब स्पर्म जो फर्टिलाइज करेगा ये तो ये होगा 22 प्लस एक्स। सो टोटल कॉम्बिनेशन क्या रहेगी? 22 प्लस एक्स एंड एक्स। सो it will be 22, sorry, it will be 44 plus x and x at 44, 45 and 46. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रिटेन किया गया नॉर्मल दैट इज 46, बट कॉम्बिनेशन क्या है? 46 कॉम्बिनेशन है 44 प्लस एक्स एंड एक्स। तो यहाँ पे एक्स 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 जो कॉम्बिनेशन है वो फीमेल्स की है, तो मुझे बताइए ऑफस्प्रिंग क्या आ जाएगा? ऑफस्प्रिंग आएगा फीमेल, ऑफस्प्रिंग आएगा फीमेल। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग, सो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 22 प्लस एक्स, तो ऑफस्प्रिंग जो आएगा वो मेल आ जाएगा। ठीक है, मेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से हम किसी पर्सन का ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो अब आपने समझा कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होती है। तो अगर यहाँ पे आप नहीं समझोगे तो यहाँ पे मैंने इसीलिए दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह रिटेन किए जाते हैं और किस तरह कॉम्बिनेशन होती है क्रोमोसोम्स की। अगर यहाँ पे आप नहीं समझोगे तो एक और डायग्राम के जरिए अब मैं आपको समझाता हूँ थ्रू ए पॉइंट स्क्वायर। यहाँ पे ये जो फीमेल्स का एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल्स के पास है एक्स एंड वाई, तो इनमें से चांस ऑफ एरर है एक्स एंड एक्स गेट्स कंबाइंड, सो इट विल फॉर्म द फीमेल एक्स एंड एक्स। If this x will combine with this y, so it will form the x and y, so it will be a male. So if its x and x gets combined, again it will form the female. And if this is getting chance to combine, if this is sperm getting having the x chromosome is having a chance to fertilize with the egg, then it will again have a combination that is x and y, then it will be the offspring will be the male. So अब दो में से फीमेल्स और मेल्स में से अब कौन सा है जो डिटरमाइन करता है सेक्स? It is the male. Keep it in mind, it is the male that determines the sex of an individual, not a female. हमें ये कॉन्सेप्ट है कि female is responsible for the sex determination. No, it's not the female, it's a male. Why? Female के पास तो X and X क्रोमोसोम है। चलो अगर मेल्स के पास भी Y and Y होते तो क्या होता? सारे ऑफस्प्रिंग जितने भी आते हैं वो सारे मेल्स होंगे। तो एक नेचर ने एक बैलेंस रखी है, तो मेल्स के द्वारा ही मेल्स से ही सेक्स को डिटरमाइन करवाया है कि मेल्स के पास 1 x and 1 y है। तो दिस 1 x and 1 y
means that it is the male that determines the sex of an individual. Why? Because if this male's chromosome, if a male sperm carrying the X chromosome fertilizes the egg, then the offspring will be the female. If the male sperm carrying the Y chromosome fertilizes the egg, then it will be the male. If the sperm carrying the X chromosome fertilized with the egg, then it will be the female. So it's the male that determines the sex of an individual. So this was all about the sex determination. Important questions आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में. So this is how we can determine the sex of an organism. So best of luck. We'll discuss कमिंग टॉपिक्स में हम जो डिस्कस करेंगे कि जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं करैक्टर्स को. ओके, थैंक यू.